Hello everyone and very good afternoon. So welcome back guys, and today is the last chapter of the syllabus, that is index number. So let's see who all are live with us now. So many people are already live. That's great. Om Gupta is there. Then Pathak Jignesh, Chaudhary Chaitanya, Shreya, Bhumika, Swati, Amit, Parth, Vedehi, Apurva, Chanchal, Anant, Tanvi, Vidisha, Mridalika, Gautam, Ayush. Great. So welcome everybody, and thank you so much for your blessing, for your wishes. So most of you are wishing Happy Teachers Day. So thank you so much, and then same to you also, because हम लोग भी आप लोगों से कंटिन्यूस सीखते हैं, एंड जो टीचिंग है तो इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लर्निंग. तो हमें लर्निंग कभी भी रोकनी नहीं है. ऑलवेज हर दिन कुछ न कुछ नया हमें सीखने को मिलता है, और हमें अपनी लर्निंग्स ओपन रखनी चाहिए ऑलवेज. चाहे हमारी एज कुछ भी है, वी शुड बी ओपन फॉर एवरी न्यू लर्निंग्स. तो मैं भी हमेशा रेडी रहता हूँ कि मुझे आज क्या लर्निंग मिल सकती है, और उस चीजों को मैं फॉलो करता रहता हूँ. तो आई होप एवरीवन इज ऑल्सो डूइंग दैट. दैट्स ग्रेट. Srinidhi is saying very, very excited. That's great. So thank you so much, everybody. Ardhanu Vishwas, Dev, Suchiang, Navya, Dhruv, Nancy, Amit, Prem, then Lahari, Swati, Ritu, all these are also live. That's great. So welcome, everybody. And let us begin with the chapter index number. Okay. So what is basically index number? Index number is simply a ratio. We can write down index number is a ratio or an average of ratios which measure change in a variable over a period of time. सो इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर इज सिंपली अ रेशियो. और कोई भी चीज अगर रेशियो है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड. तो हियर आल्सो वी रिक्वायर टू वैल्यूज टू फाइंड इंडेक्स नंबर. सो इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो. If more than two values are available, then more ratios will be calculated. अगर दो से ज्यादा वैल्यूज अवेलेबल है तो रेशियोज बहुत सारे निकलेंगे. तो उन सारे रेशियोज का हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे. सो इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो एन एवरेज ऑफ ऑल रेशियोज विच मेजर्स चेंज. हम क्या मेजर करते हैं? चेंज, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज. या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा. किसमें? इन अ वेरिएबल. इन अ वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज अ वेरिएबल. सो हियर वेरिएबल्स आर बेसिकली प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू. वेरिएबल इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. इफ वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमारे पास प्राइस इंडेक्स हम करने वाले हैं, क्वांटिटी इंडेक्स वी आर डूइंग, एंड देन वैल्यू इंडेक्स ऑल्सो. सो इन वेरिएबल्स में कितना चेंज आ रहा है with a period of time, and here the time is yearly basis. टाइम कैसा होगा? ईयरली होगा, कि हर साल कितना चेंज हमें देखने को मिलता है. ओके. So this is the basic definition of index number. Vidisha says you are a fabulous and wonderful teacher. Thank you so much. Vaidehi says your story is too much inspiring. Thank you so much. Okay, so let's continue with this index number. So अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि at least two values are required. So these two values are required. ये दो values हमें चाहिएगी. One is known as the base period, and other one is known as current period or current year. So you can write base year and current year. So at least these two values are required. Now, what is a base year? Base year क्या होता है? Base year is a standard point for comparison
इट इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर कंपैरिजन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कंपेयर करने में हेल्प करता है। सो बेस ईयर कैसा होना चाहिए? बेस ईयर शुड बी अ रीसेंट ईयर। ये रीसेंट ईयर होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो इट मस्ट बी अ रीसेंट ईयर एंड इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब क्या होगा? किसको हम बोलेंगे नॉर्मल ईयर? नॉर्मल मीन्स विच इज नॉट अब नॉर्मल। ऑफकोर्स ये तो उसका मीनिंग निकलता ही है, बट हमें अब नॉर्मल को फिर वापस डिफाइन करना पड़ेगा। आखिर अब नॉर्मलिटी क्या हो सकती है किसी पर्टिकुलर ईयर में? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, कोविड आने की वजह से बहुत सारी चीजों की प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गई। कुछ गुड्स की डिमांड या कुछ गुड्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज हो गई। तो ऐसे ईयर को हम बोलते हैं अब नॉर्मल ईयर। तो उस अब नॉर्मल ईयर के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेट्स टेक अ सिमिलर एग्जांपल। व्हेन योर रिजल्ट केम, जब भी हमारा रिजल्ट आता है, चाहे वो क्लास 10th का है, 12th का है, और आगे भी जो भी रिजल्ट आपका आएगा, तो ऑलवेज पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। आपका रिजल्ट आपके पड़ोसी के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में, भाई बहन के साथ में कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं अगर आपके 80% मार्क्स आए हैं तो फिर आपके पड़ोसी की किसी के 85 आए होंगे, 90% आए होंगे, तो उनका कंपैरिजन हमेशा आपसे आगे वालों से किया जाता है। वो कभी भी कंपेयर 60% वाले से नहीं करेंगे कि उसके 60 आए, तेरे 85 आए या तेरे 80% आए तो वेरी गुड। सुनो, ऑलवेज कंपैरिजन वो किसके साथ में करते हैं? अपने से हायर वाले के साथ में करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? कंपैरिजन हमेशा एक नॉर्मल पर्सन के साथ में ही होगा, अब नॉर्मल के साथ में नहीं होगा। राइट? सो यू कैन रिलेट विद दिस। देन सेकंड वन इज द बेस ईयर मस्ट बी अ रीसेंट। रीसेंट मतलब ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी की प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं 1947 की प्राइस से, 1960 की प्राइस से, या आज अगर गोल्ड की प्राइस है लेट्स से 60,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स, और 1960s में हमने कहा कि उस वक्त तो 100 रुपीज थी पर ग्राम। तो ये कंपैरिजन वैलिड नहीं है, बिकॉज हम यहां से कुछ प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि महंगाई कितनी बड़ी है। ओके, तो इसके लिए द ईयर शुड बी अ रीसेंट ईयर, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नो, रीसेंट का मतलब कुछ फिक्स पर्टिकुलर ईयर्स नहीं है। इट कैन बी 3 years, 5 years, इवन 10 years कैन बी पॉसिबल। तो ये तो हुआ बेस ईयर। तो बेस ईयर एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ में हमें कंपैरिजन करना है। नाउ व्हाट इज करंट ईयर? करंट ईयर का मतलब है द ईयर विच इज कंपेयर्ड विथ बेस ईयर। ईयर विच इज कंपेयर्ड विद बेस ईयर इज नोन एज करंट ईयर। तो ऐसा ईयर जो बेस ईयर के साथ में कंपेयर हो रहा है उसी को हम बोलते हैं करंट ईयर। राइट? नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी। सो अभी तक हमने देखा एटलीस्ट टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। वन वैल्यू विल बी फॉर बेस ईयर एंड सेकंड विल बी फॉर करंट ईयर। अगर ये दोनों डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो फिर हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ what is the index number of a base year? अगर कोई बेस ईयर है तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज फिक्स होता है, दैट इज 100। इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन एज 100। ये फिक्स है। तो फिर हमें किसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर। हमेशा हमें करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। राइट? सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस इंडेक्स नंबर, what we can do, we have to bring some notations। हम कुछ नोटेशन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू टॉक अबाउट प्राइस, तो प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड देयर इज प्राइस फॉर करंट ईयर। अब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सो फॉर डिफरेंशिएटिंग इन बेस ईयर वी यूज P0। जीरो डिनोट्स बेस ईयर
and P1 denotes current year. So whenever P0 is written, it means price of current year. P0 का मतलब क्या हुआ? Price of current year. And what about P1? It is price of, sorry, मैंने उल्टा बोला. P0 is the price of base year and P1 is the price of current year. Okay, so 0 denotes base year, 1 denotes current year. Similarly, if we want to denote quantity, Q0 and Q1. So Q0 means quantity of base year. Q1 means quantity of current year. Similarly, if you want to write value, V0 denotes value of base year. V1 denotes value of current year. Okay. So Varun says clear. Then, okay. So now, how can we write the formula? So for writing the formula, there are two things. One is P01 and other is P10. Now, what is the meaning of P01? It means 1 on 0. It is 1 on 0. That means 1 will come in numerator and 0 will come in denominator. So P1 upon P0. And if you want to write P10, it means 0 on 1. It means 0 on 1. So P0 upon P1. P0 upon P1. Okay. Now, since index number is a ratio and it is expressed in terms of percentage, index number should be expressed in terms of percentage. So in order to find the percentage, we have to multiply by 100. We have to multiply by 100. So P1 upon P0 multiply by 100. So this is the basic formula to calculate a price index number. So we always use P01 and not P10. P01 का ही यूज होता है, 10 को हम यूज नहीं करते. Why so? Because हमेशा करंट को हम पिछले से कंपेयर करते हैं. पिछले को करंट से कंपेयर करने की नॉर्मली रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. Okay, so always current year should be compared with the previous one. इसलिए current कहाँ रहेगा? टॉप में, and base में always क्या रहेगा? पुराना year, that is base year. So you can also write this in the word form. So for calculation of price index number, the formula is price of current year divided by price of base year multiplied by 100. Price of current year upon price of base year multiplied by 100. So this is a basic formula. Miss Lahiri Pentakota says, Happy Teachers Day, a lot of inspiration, positive vibes from you. So thank you so much. Thanks, Lahiri. So this is the basic formula for price index number. Now let us take some figures to get the clarity. Year is given. Year 2018, 19, 20, 21. Prices are given 10, 12, 15, and 20. All these are the prices. Now, question में always given रहना चाहिए कि what is the base year. If it is not mentioned, अगर question में mention नहीं है, तो जो सबसे पुराना year है, that will be the base year. So here 2018 will be the base year. 18 हमारा क्या है? Base year. And 10 को हम क्या बोलेंगे? Price of base year. So it is P0. It is P0. Now, हमें क्या calculate करना है? Index number, that is price index number P01. So what is the formula? P1 upon P0 into 100. This is the basic formula. So 2018 हमारा base year है and index number of base year is always taken as 100. ये fix है. तो 2018 का index number तो क्या रहेगा? 100.
Now, in order to calculate 2019, so 12 rupees is P1, that is the price of current year. So 12 upon 10 into 100. What is the index number? 120. Then the next one, 2020, 15 upon 10 into 100. It gives 150. And for 2021, it is 20 upon 10 into 100. That is 200. So in this way, we can calculate all index numbers using the basic formula. ओके नाउ इससे हमें क्या पता लगता है 18 में इंडेक्स नंबर 100 था 2019 में इंडेक्स नंबर 120 है तो इससे क्या समझ में आया कि प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 20% प्राइसेस 20% से इंक्रीज हो गई नाउ व्हाट विल बी द कंक्लूजन फॉर 2020 20 का कंक्लूजन क्या होगा So this means prices have increased by 50%. Why 50%? Because comparison हमेशा बेस ईयर के साथ ही होगा बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है करंट ईयर का 150 सो डिफरेंस विल बी 50% राइट एंड फॉर 2021 इट इज 200 तो 100% से राइज हुआ है इंडेक्स नंबर ओके एंड लेट्स टेक 2022 ऑल्सो इस बार प्राइस हो गई 9 रुपीज सो व्हाट विल बी इंडेक्स नंबर नाउ अभी क्या इंडेक्स नंबर होगा सो इट विल बी 9/20 into 100 9/20 into 100 it gives 90 तो अभी इंडेक्स नंबर 90 है नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन पहले 100 था अभी 90 हो गया सो इंडेक्स नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 10% मतलब महंगाई कम हो गई है रिड्यूस हो गई है दिस इज अवर कंक्लूजन ओके तो आशा बेगम प्लीज ऑल क्लियर टिल हियर दैट्स ग्रेट तो बेसिक्स आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है समझ आ चुका है नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सम formulas yes now in order to calculate index number there are two main methods one is simple other is weighted सिंपल का मतलब क्या है सिंपल का मतलब है कि जितनी भी कमोडिटीज अवेलेबल है सबका वेट बाय डिफॉल्ट हम क्या मान लेते हैं सेम जितनी भी कमोडिटीज है सबका वेट हम सेम अज्यूम कर लेते हैं प्रैक्टिकली इट इज नॉट देयर बट वी अज्यूम दैट इट इज सेम जबकि वेटेड मेथड में क्या होगा वेट इज असाइंड सो वेट इज असाइंड एज पर द रिक्वायरमेंट तो लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल एंड उसके बाद आपको जज करना है कि दोनों में से कौन सा मेथड बेटर रहेगा लेट्स से फॉर मेकिंग चपाती यू रिक्वायर सम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं बताओ जरा चपाती आपको बनानी है तो उसके लिए क्या क्या मुझे चाहिएगा वी रिक्वायर व्हीट ओके और क्या चाहिएगा वाटर पानी चाहिएगा और क्या चाहिएगा सॉल्ट दैट्स इट थ्री आइटम्स बेसिक रिक्वायरमेंट wheat, water, and salt. These three commodities are required. और कुछ ऐड करना चाहें तो you can add ghee also, butter also. So that is different. So now we are taking these three commodities. Now if you use simple method कहता है तीनों का रेशियो इक्वल तीनों का रेशियो इक्वल अगर आप wheat यूज कर रहे हैं 100 ग्राम्स तो वाटर भी यूज कर लो 100 ग्राम्स एंड सॉल्ट भी यूज कर लो 100 ग्राम्स सो इज इट प्रैक्टिकेबल क्या ये प्रैक्टिकेबल है क्या हम सबको इक्वल रखेंगे आंसर इज नो ऑफ कोर्स नो अगर ऐसी चपाती हमें खानी पड़े विद 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट तो सोचे क्या हालत हो जाएगी हमारी राइट सो व्हाट इज अप्रोप्रिएट हियर अप्रोप्रिएट क्या है कि वीट हमें पता है कि चलिए 200 ग्राम हमने ले लिया वाटर की क्वांटिटी हमें चाहिए कि लाइक 100 ml हमने यूज कर लिया बट सॉल्ट भी रिक्वायर अ पिंच ऑफ सॉल्ट सिर्फ 2-5 ग्राम हमें सॉल्ट रिक्वायर्ड है 2 to 5 grams एज पर अवर नीड बट नॉट 200 ग्राम्स तो इसका मतलब सबका वेट
क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो वेट क्या शो करता है, वेट शोज इंपॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटी, कि कौन सी कमोडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको कितनी क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस। सो नाउ इन सिंपल ऑल्सो, अब देखिए सिंपल मेथड प्रैक्टिकेबल नहीं है बट हमें पढ़ना है, बिकॉज फॉर्मूला भी है, कैलकुलेशन भी सब कुछ होगी, हमें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन कंक्लूजन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड बेटर है। तो सिंपल में देर आर टू मेथड्स, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड में भी दोनों मेथड है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये फोर डिफरेंट फॉर्मूलेज यहाँ पे हमें स्टडी करने हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ प्राइस इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, P01, P01। तो अभी तक हमने P01 को क्या लिखा था, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस वाज द बेसिक फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। बट अभी हमारा मेथड कौन सा है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। नाउ एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट मींस टोटल। So we have to write the total of P1 and total of P0. So final formula क्या बनेगा, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 multiply by 100. Okay, multiply by 100. This is the basic formula for simple aggregative method. So let us understand with the example. There are different commodities A, B, C, and D. P0 that is price of base year, P1 price of current year. ये दोनों में given है, price 100 and then 200, 1000 and then 1050, then 40 rupees and 30 rupees, and last one is, let's take 20, and here it is same 20. Okay, now as per this simple aggregative method हमें क्या करना है, दोनों का टोटल कैलकुलेट करना है, sigma p0 and sigma p1. So what is the total, 1160, 1160. What is the total of p1? So it will be 1300. So 1160 and 1300. Now write the figures and then simplify. तो अब इसका इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा, लेट्स कैलकुलेट। 1300 divided by 1160 into 100. So it becomes 112%. 112%. Swati has given the answer. That's great. So this is simple aggregative method. Now, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में ये ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पे यूनिट्स कुछ भी ले सकते हैं, बट अगर हम यूनिट्स को चेंज कर दें तो इंडेक्स नंबर हमारा चेंज हो जाता है। तो इस एग्रीगेटिव मेथड में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, दैट इज नोन एज सिंपल सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। Now, in this method, what we have to do, there are two steps. दो steps है यहाँ पे. In first step, we have to calculate a relative. To find price relative. The first step is to calculate price relative. Now, price relative is denoted by R.
कुछ बुक्स में इसको पी से भी डिनोट करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ पी वी विल राइट आर, ताकि प्राइस के साथ में हम इससे कंफ्यूज ना हो। तो रिलेटिव इज आर। आर कैसे आएगा? द सेम फॉर्मूला, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो इंडिविजुअली हर कमोडिटी के लिए आपको पहले क्या निकालना है? रिलेटिव कैलकुलेट करना है। एंड इन सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, कि जो भी हमने रिलेटिव निकाला है उसका एवरेज आपको कैलकुलेट करना है। नाउ एवरेज कौन सा करें? हमने तो बहुत सारे एवरेज पढ़े हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन के अंदर भी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो जब हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, तो प्रॉपर्टीज हमने ये देखा था कि रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट बेस्ट एवरेज कौन सा है? तो बेस्ट एवरेज इज ज्योमेट्रिक मीन। बेस्ट एवरेज is geometric mean. So if you want to calculate price index number using geometric mean, then what is the formula? जितने भी प्राइस रिलेटिव है उसका ज्योमेट्रिक मीन आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स से देयर आर टू प्राइस रिलेटिव R1 एंड R2, दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड फाइंड द स्क्वायर रूट। इफ देयर आर थ्री रिलेटिव्स R1, R2, R3, तीनों को मल्टीप्लाई करें एंड फाइंड द क्यूबिक रूट एंड सो ऑन। This is P01. But if you want to use arithmetic mean, why arithmetic mean? Because arithmetic mean is most commonly used. सबसे ज्यादा काम आने वाला एवरेज arithmetic mean है, एंड उसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान भी है एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक मीन। सो इफ arithmetic mean is used, then use the formula for arithmetic mean, sigma r upon n, sigma r upon n. So let us calculate in the same example. So what will be the first step? First step is to find r, that is to find the relative. So P1 upon P0 into 100. So कितना आ जाएगा? 200. For the next one, 1050 upon 1000 into 100. So it will give 105. Then 40 upon 30 into 100. How much? 133. Then the next one is 20 upon 20 into 100. It is 100. So first step क्या था आपका कि आपने सारे relatives को calculate कर लिया. Then second step is to find out the total. So what is the total? Let's calculate. Total is 200. Sorry, 448.33. This is the total. फर्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट किया आर, प्राइस रिलेटिव, एंड सेकंड स्टेप में किया टोटल। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग अर्थमेटिक मीन, सो सिग्मा आर अपॉन एन, सो 448.33 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ रहा है? 112.08। एंड इफ यू वांट टू सॉल्व यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, देन क्या करेंगे? सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई एंड देन फाइंड द फोर्थ रूट। तो 200, 105, 133.3 एंड देन 100, मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम एंड देन फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का बटन आपको 2 टाइम प्रेस करना है, रिमेंबर, बिकॉज इट इज फोर्थ रूट। सो 129.36। This is the price index number using geometric mean. एंड यस, हमने यहाँ पर एक जगह कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 40 एंड 30 वाला जो फिगर है ये इंटरचेंज हो गया है। सो लेट्स
recalculate. First is 200, 105. थर्ड केस में इट इज 30/40 into 100, ये होना चाहिए था. सो इट विल बिकम 75 एंड लास्ट वाला 100. ओके, सो यहां पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था. तो इट विल बी 30/40 into 100. Now you can find the total and let's recalculate the answers. So it is 480. So price index number using arithmetic mean, it will be 480 divided by 4, that is 120. And then price index number using geometric mean. So find out the fourth root. Find out the fourth root. So let us multiply all of them first. And then square root, we are getting 112.02. Okay, so this will be the index number. So in this way, we can easily calculate the price index number using simple price relative method. तो सिंपल में आपने दोनों मेथड कर लिए हैं, सिंपल एग्रीगेटिव एज वेल एज सिंपल प्राइस रिलेटिव. So there is one illustration based on this simple aggregator. Commodities for 98, price is given 99 and then 2000. So prices are available for 3 years. First commodity is cheese, rate is for 100 grams, egg per piece, and potato is per kg. Now you have to find out index number using simple aggregative method for 1999. See, for 98, it is fixed since it is the base year, so index number will be 100. 99 का calculate करना है. So for 99, the aggregate, the total is 24.6 divided by total of base year into 100. So it becomes 123. And if you want to calculate for the year 2000, तो 2000 का टोटल आपको लेना है. The total is same, so answer will also be same. Now, simple method we have done, उसका drawback भी हमें पता है. So better क्या है? Weighted method. Now, in weighted again, there are two different methods. One is aggregative and second one is price relative. So let's start with weighted aggregative method. Now, in weighted aggregative method, हमें क्या करना पड़ेगा? वेट अज्यूम करना पड़ेगा कि हम किसको वेट लें, किस कमोडिटी को, किस आइटम को कितना वेट हमें असाइन करना है. तो हम वेट किसको दें, क्या वेट लेना चाहिए? तो नॉर्मली क्वांटिटी इज टेकन एज वेट. नॉर्मली क्वांटिटी इज टेकन एज वेट. सो अभी तक का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 into 100. This was the basic formula in simple aggregative method. बट अभी क्यों, हम क्योंकि वेटेड कर रहे हैं तो आपको वेट असाइन करना पड़ेगा. तो वी कैन असाइन Q, दैट इज क्वांटिटी. तो सिग्मा P1 into Q divided by sigma P0 into Q multiplied by 100. So this becomes P01. That is the formula for weighted aggregative method. Now there is one point, like यहाँ जो आपने क्वांटिटी यूज ली है, ये क्वांटिटी कौन सी है? Whether it is Q0, it is Q1 या फिर कुछ और. So based on this, there are different weighted aggregative methods. In short, weighted aggregative के अंदर भी वापस सब parts available हैं. So let's write. The first one is
लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, then purchase price index number. Last year price index number, purchase price index number. So let's calculate these two. What are the formulas for these two? Now, last pair ने किसको वेट लिया है? लास्ट पेयर ने Q0 या Q1 किसको वेट लिया होगा? Anyone having idea? Anyone? कि लास्ट पेयर ने किसको वेट लिया होगा? No one? So last pair has taken weight as base quantity. लास्ट पेयर ने बेस क्वांटिटी को वेट लिया है, दैट इज Q0. सो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. देन पाशे के लिए P01 इक्वल टू सिग्मा P1 एंड देन अपॉन में सिग्मा P0. नाउ पाशे ने किसको वेट लिया होगा? तो पाशे ने लिया है करंट ईयर की क्वांटिटी को, दैट इज Q1. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. So this becomes purchase price index number. Purchase price index number. Then the third one is, अब लास्ट पेयर एंड पाशे के बाद में नेक्स्ट कौन आ गया? नेक्स्ट आ गया मार्शल एंड एजवर्थ. मार्शल एंड एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर. अब यहां प्रॉब्लम क्या हुई? लास्ट पेयर ने बेस ईयर की क्वांटिटी को ले लिया, पार्शियल ने करंट ईयर को ले लिया, तो मार्शल किसको लेगा? तो मार्शल ने क्या किया? दोनों क्वांटिटी का एवरेज ले लिया एंड इट वाज टेकन एज वेट. तो Q0 प्लस Q1 अपॉन 2. सो एवरेज क्वांटिटी को ही बेस मान लिया किसने? मार्शल एंड एजवर्थ. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सिग्मा P1 into Q0 plus Q1 upon 2 divided by sigma P0 Q0 plus Q1 by 2 and then whole multiply by 100. So this becomes the formula for Marshall and Edgeworth price index number. Marshall ने किसको वेट ले लिया है? एवरेज क्वांटिटी को. Now can we cancel this Q0 plus Q1 upon 2? No, we cannot cancel because आगे सिग्मा लगा. जब तक सिग्मा लगा है you cannot cancel the variables. Variables को हम cancel नहीं कर सकते, but if you want we can cancel this 2 and open the bracket. Bracket को जरूर open कर सकते हैं. So it can also be written as, the same formula can also be written as sigma P1 Q0 plus sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q0 plus sigma P0 Q1 and at last multiply by 100. At last multiply by 100. This is Marshall and Edgeworth price index number. So Marshall भी चला गया. अब Marshall के बाद नेक्स्ट कौन आया? डॉर्बिश एंड बाउलिन. डॉर्बिश एंड बाउलिन. अब इन लोगों ने क्या कलाकारी की होगी? लास्ट पेयर ने बेस ईयर लिया, पाशे ने करंट ईयर ले लिया, मार्शल ने दोनों के क्वांटिटी का एवरेज ले लिया. अब डॉर्बिश एंड बाउलिन ने अपना थोड़ा सा दिमाग और लगाया. उसने क्या किया? लास्ट पेयर एंड पाशे के पूरे फॉर्मूले का ही एवरेज ले लिया.
मार्शल ने तो क्वांटिटी का एवरेज लिया था, बट डॉर्बिश एंड बाउल ने तो पूरे फॉर्मूले का ही एवरेज ले लिया. सो इट बिकम्स P01 इक्वल टू लास्ट पेयर प्लस पार्शियल डिवाइडेड बाय 2. तो लास्ट पेयर को निकालो, पार्शियल को निकालो, एंड दोनों का एवरेज. और दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको ओपन कर सकते हैं. पहले हम लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिखें, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 divided by 2 and then multiply by 100. Multiply by 100. So this is the formula for Dorbish and Bowley. तो सिंपली एवरेज ऑफ, कौन सा एवरेज है? सिंपल एवरेज, सिंपल अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शियल. नाउ वन मोर फॉर्मूला इज देयर. कौन सा? फिशर. अब फिशर ने क्या कलाकारी की होगी? फिशर जो है सबसे बड़ा कलाकार निकला. फिशर सबसे बड़ा कलाकार निकला. फिशर को एक बात पता चल गई. क्या बात पता लग गई? कि इंडेक्स नंबर एक रेशियो है, एंड रेशियो को कैलकुलेट करने का बेस्ट एवरेज कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक मीन. रेशियो को कैलकुलेट करने का बेस्ट एवरेज कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन. तो फिशर ने क्या किया? लास्ट पेयर एंड पार्शियल के फॉर्मूले का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया. तो लास्ट पेयर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल एंड देन स्क्वायर रूट. तो उसने लास्ट पेयर एंड पार्शियल के फॉर्मूले का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, एंड फिशर का फॉर्मूला बन गया द बेस्ट फॉर्मूला. सो दिस फिशर्स इंडेक्स नंबर इज नोन एज आइडियल इंडेक्स नंबर. इसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. सो फिशर इज रिगार्डेड एज आइडियल इंडेक्स नंबर. एंड दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज रूट ऑफ लास्ट पेयर का फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q and then multiply by 100. So this becomes Fisher's index number. So these are the main five formulas in weighted aggregative method. तो इन सबको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल चैलेंजिंग. आप इसको आपस में कनेक्ट करके याद रख सकते हैं. So let us give a quick recap to all these formulas. फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज लास्ट पेयर. लास्ट पेयर ने किसको वेट माना है? बेस ईयर की क्वांटिटी को, क्योंकि लास्ट पेयर को बेस पसंद है. राइट, लास्ट पेयर को बेस पसंद है. देन पार्टिस क्वांटिटी. पार्टिस ने क्या किया? Q1 को वेट मान लिया. सो फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. मार्शल एंड एल्बर्ट ने क्या किया? एवरेज क्वांटिटी को वेट अज्यूम किया, तो उसका फॉर्मूला ये बन गया. अब इसके फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक क्या है? द ट्रिक इज वेरी वेरी सिंपल. ट्रिक इज वेरी सिंपल. न्यूमरेटर में आपको कौन सी वैल्यूज रखनी है? P1 वाली वैल्यूज रखनी है. P1 के साथ में Q0 एंड P1 के साथ में Q1. डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यूज रखनी है? P0 वाली. P0 के साथ में Q0 एंड देन Q1. ओके, ये ट्रिक याद रख सकते हैं. या फिर दोनों जो न्यूमरेटर में है, ये क्या है? लास्ट पेयर का न्यूमरेटर एंड पास्ट का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लास्ट पेयर का डिनोमिनेटर प्लस पास्ट का डिनोमिनेटर. सो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन राइट डाउन. इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं. राइट. देन डॉर्बिश एंड बाउले. सिंपली क्या करना है? लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिखा, पास्ट क्या किया? डिवाइडेड बाय 2. And Fisher के लिए again last pair and past is available, so you have to simplify this. Sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 multiply by sigma P1 Q1 and divided by P0 Q1 into 100. So this is basically the geometric mean. Okay. So I think everyone is clear till here. So these are the basic formulas.
Now let's take some example based on this commodity A and B, P0, P1, Q0, Q1. So P0 and P1 is given. Let's take 5 and 6, 3 and 5. Quantity is 20 and 40, 60 and 100, which is given. This is your question. Now, इस क्वेश्चन से आपको सारे 5 weighted aggregative index number calculate करने हैं. So, according to first formula, last pair price index number, what we require? Sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0. And partial में क्या required होगा? P1 Q1 and then P0 Q1. So these four values are required. So what is P1 Q0? 120 and then 300. What is P0 Q0? 100 and then 180. P1 Q1 240 and 500. P0 Q1 200 and then 300. So in this way, you can calculate all the four totals. ये चारों वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड होगी. So it becomes 420, 280, 740 and then 500. Asha Begum says all clear. Varun says clear. Dev Kumar says best understood. Ritu is saying crystal clear. Miss Lehari is saying clear. Dev Kumar is saying you explained very well. That's great. Okay. So last year's price index number sigma P1 Q0 420 upon P0 Q0 280 multiplied by 100. So let's calculate the percentage. It is 150%. Then the second one, purchase price index number. Now, in case of purchase, P01 equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1. So 740 divided by 500 into 100. How much is there? 148. This is purchase price index number. Third one is Marshall and Edgeworth. So it is very easy. Write the numerator first. 420 plus 740. So last year and past year दोनों का numerator लिखा आपने, divided by denominator of both 280 plus 500 multiplied by 100. So let's calculate the total. So it is 148.72. 148.72. Then fourth one, Dorbish and Bowley. Simply last pair plus purchase divided by 2. So it becomes 149. And last one, Fisher. So root of 150 into 148. So it is 148.996. So it is 149. So this is weighted aggregative index number.
तो आई थिंक सारे इंडेक्स नंबर, पांचों इंडेक्स नंबर आपके यहाँ कैलकुलेट हो चुके हैं. एवरीथिंग इज डन. नाउ now the next number is the chain based index number. Now what is the chain based index number? As the name suggests, chain. तो कभी अपने चेन को बना हुआ देखा होगा. एक कड़ी पिछले से जुड़ी होती है, फिर नेक्स्ट. तो ऑलवेज देर इज सम कनेक्शन विद द प्रीवियस वन. पिछली के साथ में हमारा कनेक्शन रहता है. तो सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो. सो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर. So what is the basic formula for chain base? Let's write here. Chain base index number. P01 is equal to price of current year divided by price of previous year and then multiply by 100. Numerator में current year divided by previous year and then multiply by 100. So in this way, you can calculate the chain base index number. So let's take one example. Year is given 2018, 19, 20, 21. Okay. Then price is given. So price is 20, 25, 40, and then 50. Now, if you have to calculate the chain base index number, in short, you can write CBI, chain base index number. Now, according to this formula, price of current year divided by price of previous year multiplied by 100. So since 2018 is the first year, so index number will be 100. Base year का by default क्या होता है 100. Now 2019 का 25 upon 20 into 100. So it is 125. Now for 2020, 40 should be compared with 25. 40 का comparison 25 के साथ में होगा. So it will become 160. Then 50 will be compared with 40. So 50 upon 40 into 100. So how much? 2.5 into 50 is 125. So in this way, you can calculate chain base index number. So always comparison is made with the previous one. Comparison आपको previous के साथ में करना है. Okay. Whether is asking how to remember the names, it is very easy. If you do 2-3 questions for practice, you will easily remember everything. Okay. Now, जिस तरह से हमने प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया है, सिमिलरली we can calculate the quantity index numbers also. Quantity index number. So what should be the basic formula for quantity index number? It will be Q01 equal to Q1 upon Q0 into 100. Quantity of current year divided by quantity of base year multiplied by 100. If there is aggregative method, simple aggregative method, then Q01 equal to sigma Q1 upon sigma Q0 multiplied by 100. तो जैसे ही एग्रीगेट लगता है, एग्रीगेट मीन्स यू हैव टू पुट सिग्मा, राइट. तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में भी सेम पैटर्न से आपको फॉर्मूले बनाने हैं. यू डोंट हैव टू मगअप, रटना नहीं है. जो हमने पैटर्न से फॉर्मूले बनाए हैं प्राइस इंडेक्स नंबर में, उसी पैटर्न से आपको यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले फॉर्म करने हैं, बनाने हैं. So if it is weighted quantity index number, weighted quantity index number,
तो हमने प्राइस इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी को वेट लिया था, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम किसको वेट ले लेंगे, प्राइस। सो प्राइस विल बी टेकन एज वेट। The formula will be Q01 equal to sigma Q1 into P divided by sigma Q0 into P and then multiply by 100. So this is the basic formula for weighted quantity index number. Now, if you want to write, let's say, last pair's quantity index number. लास्ट पेयर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर किसको वेट लेता है, बेस को लेता है। तो P0 is taken as weight. P0 is taken as weight in last pair's quantity index number. So Q01 equal to sigma Q1 P0 upon sigma Q0 P0 multiplied by 100. So this becomes the last pair's quantity index number. Similarly, if you want to write passage quantity index number, the formula will be Q01 equal to sigma Q1 P1 upon sigma Q0 P1 multiplied by 100. Multiply by 100. So this is the formula. All right, everyone. Similarly, if you want to calculate Fisher, that is the geometric mean, find out the geometric mean of these two. Last pair multiply by Pache and then full. Okay. So base year is denoted by 0 and current year is denoted by 1. In place of 1, n can also be written. 1 की place पे आप चाहें तो n को भी लिख सकते हैं. Okay. Now, before moving further, let's take a break and then we will be continuing. Break for 10 minutes.
तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो जिस तरह से प्राइस इंडेक्स नंबर में हमने फॉर्मूलेस क्रिएट किए थे, सेम पैटर्न में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के भी फॉर्मूले हम क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट एज वी डिड फॉर लास्ट पेयर पार्चेज देन मार्शल एजवर्थ, ऐसा आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। इवन फॉर डॉर्पेश मार्शल एजवर्थ किसी का भी कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू इंडेक्स नंबर? वैल्यू इंडेक्स नंबर, तो वैल्यू का मतलब होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। लेट्स से वी वांट टू परचेज पेन, द प्राइस ऑफ पेन इज रुपीज 20 per unit and quantity we require is 5. We require 5 pens. So how much will be the bill amount? The bill amount will be 20 into 5, that is 100. So this 100 is nothing but the overall value of the pen. So value को calculate करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Price multiply by quantity. Okay. Mr. Purva is asking what is the formula for weighted average of relative method. Yes, we will be doing now only. Do not worry. We will be taking just after this relative method. Okay. So value is price into quantity. So what is the formula for V01? It will be sigma V1 upon sigma V0 multiplied by 100. Now how to calculate V1? That is the value of current year. So it is P1 multiplied by Q1 upon sigma B0. So it is sigma P0 Q0 multiplied by 100. So in this way, we can calculate P01. Okay. All right. Now, okay, before we move towards the theory and next topic, let us calculate weighted price relative method. Weighted price relative method. Now, in this weighted method, the first step will be to find price relative. So in first step, always we have to calculate price relative. So R is equal to P1 upon P0 multiplied by 100. This is the basic formula. Now in second step, we have to calculate the average. Find average. So P01 equal to sigma RW upon sigma W. Sigma RW upon sigma W. W is nothing but the weight. जो भी आपने weight assign किया है, so it is the formula for weighted average. So sigma RW upon sigma W. So let's take one example also. Commodity is given A and B, P0, P1, and then weight. So P0 is, let's take 200 and 250, then 300 and 500. This is given. Now weight is 3 and 7. This is the weight. Now, according to formula, what we require, we have to calculate R first, that is price relative. So P1 upon P0 into 100. So 250 upon 200 multiplied by 100. It is 125. Then 500 upon 300 into 100. It will be how much? 166.67, I think, right? 166.67. This is R. Now, what is the next step? We have to calculate RW. So 3 into 125 gives 375 and 7 multiplied by this
1166.67. Let's add them. Is 1541.67. This is RW. Now, P01 is equal to sigma RW upon sigma W. Total is 10. So 154.167. This is P01, that is the price index number. So in this way, we can easily calculate. All right. Saloni has given the answer 154. So weighted price relative is also covered now. Then what are the usefulness of index number? So this is a theoretical portion. So index number are always constructed from samples. So there might be some limitations and usefulness. So what are the limitations basically? Index number are constructed from samples. So since they are constructed from sample, so chances of error cannot be always avoided. मतलब error होने के chances हो सकते हैं. Second is index number are based on some selected item. ये कुछ selected item के ऊपर based होता है. तो इससे हमें एक broad trend पता लगता है और ना कि कोई real picture. For example, अगर हम अपने घर में देखें और लिस्ट बनाएं कि आप कितने commodities यूज कर रहे हैं. So no doubt it will be more than 500 commodities. 500 से ज्यादा commodities हो सकती है. उसमें सारी चीजें आप काउंट कर लीजिए, चाहे मोबाइल फोन, सिम, टेलीविजन, किचन के अंदर आप 100 आइटम्स काउंट कर सकते हैं एंड सो ऑन. सो इतने सारे आइटम्स को हम इंक्लूड करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं करते हैं. हम किसको इंक्लूड करेंगे? जो हमें ज्यादा काम में आता है, जो रेगुलर काम में आता है, दैट इज यूज. तो सिंस हम सारे कोमोडिटीज को यूज नहीं करते हैं, तो रियल पिक्चर हमारे सामने नहीं आती है कि हमारे लिए महंगाई कितनी बड़ी है. सिर्फ एक मोटा मोटी ट्रेंड का पता लग जाता है. राइट. देन मेनी मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या? हर मेथड से इंडेक्स नंबर की वैल्यू अलग आती है, तो कौन सा मेथड हमें यूज करना है? तो दिस ऑल्सो क्रिएट सम कंफ्यूजन. But in spite of limitation, there are few useful things also. अगर हमें कोई इकोनॉमिक्स में सूटेबल पॉलिसीज बनानी है, तो पॉलिसीज बनाने के लिए ये हमें एक ट्रेंड, एक आइडिया हमें दे देता है, so that we can make decisions based on this. They reveal trend and tendencies in making important conclusion in cyclical or irregular forces. तो जब भी मार्केट में अचानक कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, डाउनफॉल या अपवर्ड मूवमेंट आता है, तो उस वक्त भी हमें ये हेल्प करता है. तो इट इज जस्ट लाइक अ शेयर मार्केट. तो शेयर मार्केट में सेंसेक्स, निफ्टी, ये सभी क्या है? इंडेक्स नंबर है. तो वो क्या डिनोट करता है? सेंसेक्स जिस दिन फॉल हुआ, मतलब शेयर्स की प्राइसेस कम हो रही है, एंड अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब शेयर्स की प्राइसेस राइज हो रही है. तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड. When there are important in forecasting future economic activity, तो कुछ फोरकास्ट करने के लिए भी ये हमें हेल्प करता है. दे आर यूज इन टाइम सीरीज, लॉन्ग ट्रेंड एनालिसिस. तो अगर हमें कुछ फोरकास्टिंग करना है, फ्यूचर के लिए कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसमें भी ये हमें हेल्प करता है. देन इंडेक्स नंबर आल्सो यूज फॉर डिफ्लेटिंग. डिफ्लेटिंग मीन्स व्हाट? डिफ्लेटिंग का मतलब है कि अगर हमें दो डेटा को कंपेयर करना है, तो हम उसको कंपेयर करके पता लगा सकते हैं वेदर वी आर हैविंग गेन और नॉट. कि एक पर्सन की सैलरी पहले 10,000 थी और अभी 12,000 हुई है, तो रियल टर्म्स में उसको गेन हुआ है या नहीं हुआ है. तो इसके ऊपर हम अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. तो दिस प्रैक्टिकल पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है. And cost of living index number measures change in the cost of living over a given period. So overall index number से हमें बहुत सारे benefits मिल जाते हैं. Rohit says even full form of Sensex include index, right? Okay.
So now let's write one more thing, that is cost of living index number. Cost of living index number or consumer price index number, also known as general price इंडेक्स नंबर. सो इतने सारे नेम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर और ग्रुप इंडेक्स नंबर. सो ये जो सारे नेम हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अगर क्वेश्चन आपको बोलता है फाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देयर आर टू फॉर्मूलाज. वन इज द लास्ट ईयर्स फॉर्मूला, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर. So P01 equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 multiplied by 100. And second formula is weighted price relative method. जो भी हमने लेटेस्ट किया था ऊपर, sigma RW upon sigma W, where R is the price relative. So using this method, we can calculate cost of living index number. Then let us calculate deflating of index number first. So what is basically the deflating of index numbers? Deflating deflating index number, or you can say it is the formula for calculate real wages. So it is wages upon price index number multiplied by 100. Wages upon price index number multiplied by 100. So let's say a person is having wages of 20,000 in the year 2017 and 30,000 in the year 2020. Now हमें ये बताना है कि इस पर्सन को कितना गेन या कितना लॉस हुआ है, राइट? तो वेजेस गिवन है, इंडेक्स नंबर गिवन है. अगर हम डायरेक्टली देखें वेजेस 20 से 30 हो गई, तो दिखने में हमें क्या समझ आ रहा है कि 10,000 से वेजेस बड़ी है, सो गेन कितना होना चाहिए? 10,000. बट दिस इज द रॉन्ग आंसर. यह आंसर गलत है. आंसर गलत क्यों है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. हमने कहा वेजेस बढ़ गई है 10,000 से, लेकिन साथ में इंडेक्स नंबर भी तो बढ़ा है. तो इंडेक्स नंबर में कितना चेंज हुआ है? 100 से 200, मतलब महंगाई डबल हो गई. महंगाई डबल हो गई तो क्या वेजेस भी डबल हुई है? नो, वेजेस इज नॉट येट डबल. तो इसका मतलब वेजेस कम इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू expenses, as compared to prices. Therefore, this is a loss. तो लॉस कैसे कैलकुलेट करना है या गेन कैसे कैलकुलेट करना है? तो लेट अस अंडरस्टैंड. तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है रियल वेजेस. तो वेजेस 20,000 अपॉन इंडेक्स नंबर इनटू 100. तो सिंस यहाँ का इंडेक्स नंबर 100 है, तो रियल वेजेस कितनी रहेगी? सेम 20,000. बट इन द नेक्स्ट वन 30,000 अपॉन 200 इंटू 100, यहां पर रियल वेजेस कितनी आ गई? 15,000. तो पहले रियल वेजेस थी 20,000, बाद में हो गई कितनी? 15,000. तो रियल वेजेस इज गेटिंग रिड्यूस. रियल वेजेस रिड्यूस हो रही है पहले से. तो जब भी रियल वेजेस आपकी रिड्यूस होगी, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस. तो वी कैन राइट इट डाउन, देयर इज अ लॉस ऑफ 5,000. 5,000 का क्या हो रहा है? लॉस. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ईयर 2018
and 2020 income. Income of a person was 25,000. अभी इनकम हो गया है 40,000. इंडेक्स नंबर, let's take 150 and it is 180. Now find out the real income first, और तभी हमें पता चलेगा whether there is a gain or loss. So real income will be income upon index number multiplied by 100. So it is 16,666.67. Whereas in 2020, it is 40,000 upon 180 multiplied by 100. So it is 22,222. So real wages पहले से increase हुई है. पहले था 16,000, अब ये 22,000. So it is getting increased. So there is a gain. तो इस केस में gain होगा, right? So this is the process of deflating. तो जहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रियल इनकम, रियल वेजेस. नाउ बेस शिफ्टिंग और बेस स्प्लाइसिंग. नाउ व्हाट इज द बेस शिफ्टिंग हियर, इसको समझते हैं. लेट्स से दिस इज द गिवन क्वेश्चन. 1980 to 1991, the data for 12 years is given. इंडेक्स नंबर अभी कौन सा है? इंडेक्स नंबर है अभी आपका 100. दैट इज 1980 आपका बेस ईयर है. 1980 इज योर बेस ईयर और उसका आपका इंडेक्स नंबर 100 है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शिफ्ट दिस इंडेक्स नंबर टू लेट्स से 1990. अभी आपको 1990 बनाना है न्यू बेस ईयर. नया बेस ईयर आपका कौन सा है? ईयर 1990. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां आपने फिक्स कर दिया दिस इज योर इंडेक्स नंबर दैट इज 100. अब आपको सारे इंडेक्स नंबर को शिफ्ट करना है 1990 पे. पहले 1980 वाज योर बेस ईयर, बट नाउ 1990 बिकम्स योर बेस ईयर. तो जैसे ही बेस ईयर चेंज हो रहा है, सारे इंडेक्स नंबर भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. तो हाउ टू कैलकुलेट बाय, जिस पे शिफ्ट करना है दैट इज 140 into 100. It will give you 71.4. For second one, 104 upon 140 into 100, it becomes 74%. Then 106 upon 140 into 100, it is 75.7, and so on. So in this way, we can calculate shifted price index number. In case you want to calculate 1991, so 147 upon 140 multiplied by 100. It will give you 105. Okay. This is the formula for base shifting. This is known as base shifting. जब भी आपको बेस ईयर को चेंज करना है, then we have to use this. Okay. The next point is base splicing. Splicing का मतलब क्या है? In case of splicing, there are two series of index number. दोनों सीरीज को मर्ज करके एक सिंगल कंटिन्यूस सीरीज आपको फॉर्म करना है. That is known as base splicing. That is known as base splicing. So here is a question. In this 1990 to 95, this is the data for first 6 years and then data for the remaining 6 years. ये data आपके पास available है. Now you have to find out the remaining data. अगर हम old series को continue करते हैं, तो इसके आगे वाला data calculate करना है.
So it is known as forward splicing. It is known as forward splicing. जबकि अगर इससे ऊपर वाला डेटा निकालना है, that is known as backward splicing. Okay, so it is forward and then backward splicing. Now, how to calculate this splicing? तो जब भी splicing calculate करते हैं, there is one common year. एक ईयर ऐसा होता है जो कि कॉमन है दोनों के अंदर. तो इस कॉमन ईयर से आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक रेशियो. यू हैव टू कैलकुलेट अ रेशियो. इस रेशियो के अंदर ऑलवेज 100 विल कम इन डिनोमिनेटर, अदर वैल्यू विल कम इन न्यूमरेटर. दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी? न्यूमरेटर के अंदर. So what is the ratio? So your ratio will be 1.142. Now, in order to calculate forward splicing के लिए आपको क्या करना है? रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, and in case of backward, you have to divide. So let's calculate. 100 divided by 1.142. You are getting 87.6. Simply 100 multiplied by 1.142. Then 102.3 multiplied by 1.142. It is 100 and divided by, you have to divide here. बैकवर्ड के लिए आपको क्या करना है? डिवाइड करना है. फॉरवर्ड के लिए करेंगे मल्टीप्लाई. So 102.3 divided by 1.142. It is 89.579. Then third one, 105.3 divided by 1.142. You are getting 92.2. Then next and then next. So in this way हम क्या कर सकते हैं? Splicing calculate कर सकते हैं. Okay. Now, in case you want to do forward, अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई. यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द रिजल्ट. ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज फॉर ओनली बैकवर्ड वन. बट अगर आपको फॉरवर्ड करना होता तो फिर यू हैव टू मल्टीप्लाई लाइक 102.5 मल्टीप्लाई विथ 1.14. Let's take some values here. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7. Then you are given, let's say, old index number. Old index number 100, 120, 140, and 150, or you can write 200. Here it is new index number 100, 110, 125, and 160. Now, if you want to calculate these figures, अगर आपको forward splicing करना है, so you have to find out a ratio first. So ratio will be 200 upon 100, that is 2. अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें, you will get 220, 250, and then 320. So all these are forward splicing. In case you want to calculate the backward figures, just divide. Divide by 2, 50, divide by 2, 60, divide by 2, 70. Okay? So in this way, you will get. Now the next one. Next is test of adequacy. Now, in order to check the formulas, formula को check करने के लिए जो तरीका है, that is known as test. So there are 4 tests of adequacy.
नाउ इन चारों टेस्ट में हमें क्या याद रखना है, व्हाट इज द कंडीशन एंड व्हाट इज द मेन वे ऑफ द टेस्ट। द फर्स्ट टेस्ट इज नोन एज यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट क्या है? यूनिट टेस्ट मींस फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट इन विच प्राइस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड। इन शॉर्ट, अगर हम यूनिट को चेंज कर दे तो इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो कुछ इंडेक्स नंबर ऐसे होते हैं जिससे आंसर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे ही आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। सो एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ऑल अदर फॉर्मूला सेटिस्फाई दिस टेस्ट। तो लगभग सारे ही फॉर्मूले इसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन एक जना नहीं करता है, वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये सेटिस्फाई नहीं। सेकंड वन इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसकी कंडीशन क्या है? इट सेज P01 मल्टीप्लाई विद P10 शुड बी इक्वल टू 1। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो कौन कौन इसको सेटिस्फाई करता है? तो इट इज सेटिस्फाइड बाय फ्यू टेस्ट। लेट्स से Lasper and Fisher do not satisfy. Sorry, Lasper and Passer do not satisfy, but Fisher satisfies this test. So this test is satisfied by Fisher. Also, Marshall and Edgeworth satisfy this time reversal test. Marshall Edgeworth भी इसको satisfy करता है। Then comes factor reversal test. Now, in factor reversal test, what is the condition? Price index multiplied by quantity index will give value index. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, you are getting value index. Okay? अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, that means this test is satisfied. अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, that means this factor reversal test is not satisfied. Okay? Now, only one test is there which satisfies this factor reversal test, and that is Fisher. So, Fisher's index number satisfies factor reversal test. So, Fisher is known as ideal index number. Last test but not the least, it is circular test. सर्कुलर टेस्ट इज कि अगर हम 0 को 1 से कंपेयर करते हैं, 1 को 2 से, 2 को 3 से, एंड लास्ट में 3 वापस स्टार्टिंग वाले ईयर से, बिगिनिंग से 0 से कंपेयर होता है, देन द प्रोडक्ट शुड बी 1। इन शॉर्ट इट मींस दैट P01 into P12, P23 and at last P30, the product should be equal to 1। अगर ये पूरा सर्कल का प्रोडक्ट 1 आता है, दैट मींस सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड। तो इसको लास्ट ईयर सेटिस्फाई नहीं करता, पार्शियल भी नहीं एंड फिशर भी नहीं। ऑल दीज थ्री डू नॉट सेटिस्फाई दिस टेस्ट। तो फिर कौन कर सकता है? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, देन वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट्स। तो दीज सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, लेकिन लास्ट ईयर पार्शियल फिशर को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। All right. So this type of question we have done. So let's take some quick selective questions from the exercise. A series of numerical figure which shows the relative position is known as first index number. So index number for base period is taken as base year का index number हम always क्या लेते हैं? 100. Dash plays a very important part in the construction of index numbers. किसको यूज लेते हैं हम? Weights, because हर commodity का weight अलग होता है and weight shows the importance of the commodities. Which is suitable for construction of index number.
तो सी सूटेबल कौन सा होता है, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो विच मेजर इज द बेस्ट? ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ट. Index numbers show dash change rather than absolute amount of change. So index number shows basically the relative change or in terms of percentage. So A and B meaning is same. So we can take C option both. You can say relative change or it is the percentage change. Dash makes index number time reversible. तो ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसा है जो उसको टाइम रिवर्सिबल में कन्वर्ट करता है. Let's take some good questions. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, कौन सेटिस्फाई करता है? वी हैव डन जस्ट नाउ. ऑप्शन नंबर ए, फिशर्स इंडेक्स नंबर. देन लास्पर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, तो लास्पर फैक्टर को सेटिस्फाई नहीं करता. टाइम रिवर्सल आल्सो एज वेल एज सर्कुलर टेस्ट, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. लास्पर इनमें से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता. Then let's take some good questions. Yes, P01 is the index for time. 1 on 0. P10 means 0 on 1. When the product of price index number, that is P01, and quantity index number Q01, इन दोनों का product is equal to the corresponding value, that is V01, then this is the condition for which test? Factor reversal test. Option number C. Okay. 26. The formula should be independent of unit in which price and quantities are quoted. ये condition किसकी है? This is the condition for unit test. This is the condition for unit test. Then last pair method and passive method do not satisfy. किसको satisfy नहीं करते? B and C, time reversal as well as factor reversal, but it satisfies A. Then the next one, 42, the number of tests of adequacy. There are 4 tests for adequacy. 4 tests होते हैं in total adequacy में. That is unit test, time reversal, factor reversal, and then circular test. Then let's do some practical questions from this. Third one, the best average for constructing an index number. Best कौन सा होगा? Geometric mean. The geometric mean is the best measure, best average for constructing index number. And time reversal is satisfied by, कौन satisfy करता है time reversal test को? तो लास्ट पेयर एंड पाथ तो नहीं करते, बट फिशर करता है. ऑप्शन नंबर ए. तो फिशर जो है तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, विच इज यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. इन तीन को सेटिस्फाई करता है, बट नॉट सर्कुलर टेस्ट. तो सिर्फ फिशर ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो मैक्सिमम टेस्ट को सेटिस्फाई करता है. इसीलिए फिशर इज नोन एज आइडियल इंडेक्स नंबर. Then factor reversal test is satisfied by
कौन सेटिस्फाई करता है फैक्टर रिवर्सल को? आंसर डी, फिशर। Then circular test is satisfied by simple geometric mean of price relative. Yes, seventh is good question. Fisher's index number is based on, कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें फिशर के लिए? It is arithmetic mean of last pair in Pache or the median or mode, which is the correct option. Let me know for question number 7. किसको आप सेलेक्ट करेंगे, एम, मीडियन या फिर मोड? द करेक्ट इज geometric mean. Fisher index number is the geometric mean of last pair and Pache. None of these. Then Pache's index is based on, Pache का इंडेक्स किसके ऊपर बेस्ड है? बेस ईयर और करंट ईयर? इट इज करंट ईयर क्वांटिटीज। 9 again, Fisher ideal index number is geometric mean of last pair and Paches. So Om Gupta has given the answer. Tanvi, Ardhanu Vishwas, Ritu, Saloni, Swati, Sadab, Anushka, and Dev Kumar. Yes, most of you have given the answer. That is correct. Now, 10th one, price relative is expressed in terms of, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है फॉर प्राइस रिलेटिव? So we have done R equal to P1 upon P0 multiplied by 100. So option number C. For question number 10, it is C. Then Pache's index number is expressed in terms of, Pache's index number. So current year quantity is used. So sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100. Option number C. Since index number is expressed in terms of percentage, to multiply by 100 is must. Then 15th, if the price of all commodities in a place have increased 1.25 times in comparison to base period. See, increment given is 1.25 टाइम, दिस इज इंक्रीमेंट। ये 1.25 टाइम किस पे अप्लाई हो रहा है? ऑन द बेस ईयर। सो इंडेक्स ऑफ बेस इज 100 मल्टीप्लाई बाय 1.25, इट इज 125। दिस 125 shows increase but it is not the index number। तो इंडेक्स नंबर क्या होगा? बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है, इंक्रीज हो गया 125, सो नाउ द इंडेक्स नंबर इज 225. Option number C. Then 16. If the index number of price at a place is 250 with 1984 as the base year, then the prices have increased on average by. So करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 250 है, बेस ईयर का 100 है, तो प्राइसेस आर इंक्रीज बाय 150%। ऑप्शन नंबर बी, राइट। 17, if prices of all commodity in a place have decreased by 35% over the base period, so base year 100 decreased by 35, so it becomes 65. 65. So option number C. Right? So Naz is asking, please share some tips related to exams. Sure. See, especially in our paper, that is paper number 3.
In paper number 3, what is the biggest challenge? Like you are having 100 questions and 120 minutes. So, and also you have to fill the OMR sheet. तो OMR sheet को fill करने में भी time जाता है. Approx 10 to 15 minutes are gone in filling the sheet. So, average 1 minute per question. You have to complete one complete question in 1 minute. So then only you can complete the whole paper, whole 100 questions. तो आपकी स्पीड यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करेगी और स्पीड शुड बी परफेक्ट. स्पीड आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. To speed के लिए you have to practice regularly on the calculator. Calculator पे हमेशा practice करते रहें. Use all the functions, memory functions, GT functions. जितने function आप उसको use करेंगे उतनी calculation आपकी fast होती चली जाएगी और accuracy भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी. तो एग्जाम में आपके पास बहुत ज्यादा सोचने को और हाथ से काम करने को टाइम नहीं होता है. राइट. देन सेकंड थिंग इज, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है एग्जाम में, स्किप दैट क्वेश्चन और आगे बढ़. अगर आपने किसी एक क्वेश्चन में गलती से 2-3 मिनट 5 मिनट लगा दिए तो आपके आगे के 5 क्वेश्चन छूट सकते हैं. हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत इजी हो बट वो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास टाइम की शॉर्टेज है. तो देयरफॉर इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू स्किप द क्वेश्चन इफ इट इज टेकिंग द टाइम. क्वेश्चन चाहे लेंदी हो या शॉर्ट है, थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, मार्क्स सबका वन ही मिले. तो बेटर क्या है, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, थ्योरी क्वेश्चन कर लें, उसमें टाइम कम लगता है. जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं. राइट. सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑलवेज इन ओएमआर मार्किंग. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड आपको नहीं आया, आपने फोर्थ कर लिया. अब जैसे ही आपने फोर्थ सॉल्व तो किया बट वो टिक कहाँ हो गया, थर्ड के अंदर. एक बार एरर हो गई तो सारे क्वेश्चन में आगे से आगे ये गलती रिपीट होती चली जाती है. सो दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक विच समटाइम्स हैपन इन प्रेशर. ये प्रेशर के अंदर हो जाता है तो आपको यहाँ भी केयरफुल रहना है. बराबर 1 से 5 का आप लॉट बनाए, 5 क्वेश्चन करें, फिर 5 को ओएमआर फिल कर दे. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपने अटेंड किया और फिर नेक्स्ट 5 को आपने फिल कर दिया. तो इस तरह से आप करेंगे तो आप इजिली रिलेट कर पाएंगे कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया है और कौन सा स्किप किया है. Right? So in this way, you can do this. Then let's do some more questions. 23. Consumer price index number for 1957 was 313. So 1957 index number is 313 and 1940 is the base year. So index number is 100. The average monthly wages in 1957 was 160. This is the wages. Then you have to find out the real wages. What is the formula? Wages upon index number multiplied by 100. So 160 divided by 313 into 100. We are getting how much? 51.12. This is the real wages. Radha Prasad, thank you so much for teaching us in a fantastic method. I really want to teach like you. You always give us the reason to study that what is the use of the concept, which makes study very simple. Thank you so much once again. So great, Sada. Thank you so much for your affection. सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो भी हमने कवर किए हैं, तो हर किसी का जो फॉर्मूला है पूरा आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है. हमने एक लॉजिक देखा है कि किस तरह से फॉर्मूले क्रिएट हुए हैं, फॉर्मूले बने हैं. अगर आपको लॉजिक ऑलवेज याद रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं. अदरवाइज अगर आपने रट लिया और आप भूल गए तो वहां क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है. ऑलराइट. सो let's take one or two more questions. 30th one. Let's do this 30th question. In 1980, the net monthly income of employee was 800 per month.
So 1980 income is 800. Sorry. Consumer price index number was 160. This is index number. In 1984, index number rise to 200. एंड वेजेस के लिए कुछ भी नहीं दिया है तो वेजेस लेट्स से स्टिल सेम इफ ही हैज टू बी राइटली कॉम्पनसेटेड अगर उसको राइटली कॉम्पनसेट करना है द एडिशनल डीए टू बी पेड टू द एम्प्लॉय मतलब उस एम्प्लॉय को और कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ताकि उसका सेम स्टैंडर्ड मेंटेन रह सके सो ऑलवेज इन सच अ क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द रियल इनकम कितना है इट इज इनकम upon index number into 100 तो रियल इनकम इज 500 नाउ जो रियल इनकम 1980 में है द सेम यू हैव टू मेंटेन इन 1984 बिकॉज ही हैज टू बी राइटली कॉम्पनसेट का मतलब है सेम स्टैंडर्ड सेम रियल इनकम उसकी रहनी चाहिए तो जो 800 मिल रहा है ये कम है तो 800 की जगह पे कितना पैसा मिलना चाहिए सो रियल इनकम is equal to income upon price index number multiplied by 100. So real income is 500. Income we don't know. Index number is 200 multiplied by 100. So according to this, income कितनी होनी चाहिए 1000. Income should be 1000, but at present, how much he is getting? 800 he is getting. तो और कितना देना पड़ेगा एडिशनल 200 तो 200 इज द एडिशनल डे ये 200 और एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा ओके so in this way you can calculate Dev Kumar is asking which calculator is best for exam C that calculator which includes GT button जिसमें आपका GT है memory function है that is best ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी ब्रांड का है ब्रांड डजंट मैटर बट दीज फंक्शन मैटर्स अ लॉट तो ये फंक्शन आपको यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे दिस शुड बी देयर देन चंचल इज आस्किंग व्हिच चैप्टर्स वी कैन स्कोर मोर सी ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स आपके कौन से हैं वन इज टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट इज 12 to 16 marks then in statistics measures of central tendency, dispersion, and statistical description of data, that is theoretical topic. The weightage is 18 to 20 marks. If you calculate the total, it is 30 to 36 marks from the 4 chapters only. In 4 chapters से इतने क्वेश्चन आ जाते हैं. Besides that, we are having logical reasoning for 20 marks. So 50 to 56 marks की जो questions है वो इन topics में आ जाते हैं and these are very important and very small topics. That means not very lengthy topics, right? So using these chapters आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको बाकी चैप्टर्स नहीं करने हैं बाकी चैप्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है लाइक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 4 to 6 marks you can say index number around 3 marks then permutation and combination that 4 to 5 marks normally then you can say which one probability and probability distribution 8 to 10 marks so all these are bigger chapters तो इन बड़े chapters को तो आपको ज्यादा अच्छे से करना ही करना है right but do not worry if you are having doubts you can still ask till your exam do not worry on the students clinic application I will be live many times in this application and then solve all your doubts. Plus, you will be having all additional material also or additional video lectures also. You can go through with that. So your doubts will get solved easily. So no need to worry for that. Okay. So Vidisha says
Your each and every word are motivating. Thank you very much for wonderful teaching throughout with the same level of dedication and energy. Thank you so much for your love and affection, guys. So everyone has understood this chapter, and Dhruv is wishing again Happy Teachers Day. Vansh is also wishing. So thank you so much, everyone, for being the lovely students, and I hope you will be staying connected still on the application as well as on the YouTube channel also. Like if you search CA Gaurav Chopra on the YouTube also, then I will be there. So you will get like many video lectures there also. So बहुत सारी चीजें आपको वहां भी मिलने वाली है. तो stay connected, stay tuned, so that you can score more and more in your exams, right? So that's all for the day. That's all for the whole subject. So bye everyone. Best of luck for your exams. Hope you will do very well and आपके बहुत अच्छे marks आएंगे and you get like more than 350 marks. So that's my wish for every one of you. So bye everyone. Take care and see you soon. Over, sir.